It attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. To the मोहम्मद शहबाज शरीफ का क़ौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास का खिताब जारी था। वज़ीर-ए-आज़म A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. To the fearless architects of this victory, to every officer and soldier, heirs of our martyrs, their names are forever engraved in glory. To the mothers of our martyrs, their courage guides our path forward, and their sacrifice shall never be in vain, inshallah, God willing. And to every Pakistani, you stood as one unbreakable wall, a bunyanum marsus. Excellencies, though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. Ladies and gentlemen, we're also grateful to our friends and partners, including China, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Azerbaijan, Iran, UAE, and of course, UN Secretary General for extending their diplomatic support to Pakistan at this crucial time. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. South Asia requires, ladies and gentlemen, proactive rather than provocative leadership. India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. Pakistan has made it abundantly clear, and let there be no doubt once again in anybody's mind, as I said last year in this hall from this podium,
We will definitely and ardently defend, inshallah, the inseparable right of our 240 million people on these waters. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. Ladies and gentlemen, through this august House, I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this very organization, United Nations. Excellencies, the plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. For nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation of their homeland. In the West Bank, each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. And in Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. In blind pursuit of its nefarious goals, the Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. But speak we must, Madam President, we must speak and speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab, a child, nay, a little baby. We have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive under Israeli onslaught and atrocities. Can you imagine that little girl, Hind Rajab, as if she was our daughter? Can you imagine not having the compassion to spare her life? My agony and the agony of the entire Muslim Ummah, indeed, I think, the agony of all the nations on the planet is that we failed Hind Rajab, and she will not forgive us in this world and the world hereafter. As they say, ladies and gentlemen, the smallest coffins are the heaviest to carry. I, for one, would know, for I too carried the tiny coffin of a 7-year-old Irtaza Abbas during the recent confrontation with India. He was only 6 years old. Therefore, we cannot and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports Ladies and gentlemen, Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated, and liberated with full commitment and with full force. Excellencies, as far as Pakistan is concerned, we were among the first to recognize Palestinian statehood in 1988. And now we welcome
the recognition of the state of Palestine by a number of countries recently around the globe, and urge others to also follow suit, because time and tide wait for none. We are further grateful for President Trump's timely initiative to invite Arab Islamic states 3 days ago here in this building for a consultative session at the United Nations. And I was also part of that consultative process. And I think, and I hope and pray to God that it has rekindled hope for a ceasefire in the nearest future, for which the credit must again be attributed to President Trump for this peace initiative. Excellencies, Israel's recent attack on Doha and its continued violations of the sovereignty and territorial integrity of numerous countries is reflective of its rogue behavior. Pakistan stands unwaveringly with our brothers and sisters in Qatar. We also support all efforts for a peaceful resolution of the Ukraine conflict in line with the UN Charter to end human sufferings and global turmoil caused by this protracted war. Madam President, Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestation. For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts, having suffered over 90,000 people. We lost 90,000 people of our country, babies, children, mothers, sisters, brothers, elderly people, doctors, engineers, and also suffered economic loss of $150 billion. Please tell me, put your hand on your heart, that what can be a bigger manifestation of our commitment to fight terrorism and erase it not only from the face of Pakistan, but from the face of this global world. And I believe a man killed in New York is a man killed in Lahore, a man killed in Islamabad is a man killed in London. It's a global village. So I think unless and until terrorism is defeated hands down, this world will not be a peaceful place to live. And for that, Pakistan's sacrifices are probably the biggest around the globe. It must be respected and appreciated, because we are a bulwark. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows Far East. So I think this is our humble contribution, not only for the people of Pakistan, but the people all over the world. Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA, and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year, the train was hijacked and 400 people were kept for days and weeks. And mercifully, by Allah Almighty's grace, our armed forces and law enforcing agencies were able to recover them. Now, as an immediate neighbor and a brotherly country of Afghanistan, Pakistan has a direct stake in a peaceful Afghanistan. We believe that the key to development and prosperity lies in regional stability and connectivity. Pakistan continues to engage with all partners to extend humanitarian assistance, promote economic recovery, and encourage inclusive political framework in Afghanistan. The interim Afghan government must, however, uphold human rights, including women's rights. Above all, we expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country.
Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. Ladies and gentlemen, while we are confronted with the climate crisis, it demands the most urgent collective action. In 2022, Pakistan faced massive floods of humongous proportions that caused huge losses amounting to $34 billion and many valuable lives lost. This year again, we are dealing with another mega flood with thousands of villages washed away from the face of the earth, millions of people displaced, more than 1,000 killed, and billions of dollars of crop, livestock and property washed away, lost to flood waters. Our nation stands united in these testing times, and we are dealing with this natural calamity with remarkable resilience by the grace of God. I have declared a climate emergency to cope with this challenge. The catastrophic floods of 2022 and 2025 this year are glaring examples of loss and damage caused due to climate change. Pakistan, to the contrary, my honorable guests in this hall and through the cameras around the globe, Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. And then we are told to borrow loans and add on to our debt, huge debt pillars we have over the period of time. This is not fairness. This is not equality. This is not justice. This is not fair play. How can you expect a country which is a developing country facing humongous flood challenges every year due to climate change and no fault of ours, and yet we are told to borrow more loans? I think borrowing loan would be destroying your economy. We will be better off than not borrowing loan and standing on our own feet, working hard, tirelessly, blood and sweat, and we will, inshallah, make Pakistan a great country, inshallah. Ladies and gentlemen, while we deal with climate change, I bear good tidings on the domestic economic front. Socio-economic development and the welfare of our people are among my government's foremost priorities. We have successfully implemented deep-rooted structural macroeconomic reforms, modernized and broadened our taxation system, intensified efforts to mobilize productive investment, and embraced digitization, AI, and crypto as the tools of the future. Strategic partnerships, including our all-weather cooperation with China through the China-Pakistan Economic Corridor under President Xi Jinping's landmark Belt and Road Initiative, are contributors to our progress as I speak. I admire the vision and foresight of President Xi Jinping, whose recently launched Global Governance Initiative, along with other global initiatives, offers a comprehensive framework for a more just, fair and inclusive development. Excellencies, as a non-permanent member of the UN Security Council, Pakistan is playing its constructive role in conflict prevention. The unanimous adoption of Resolution 2788 under our presidency of the Council has renewed our collective commitment to multilateralism, respect for the UN Charter, and effective implementation
of UN Security Council resolutions. Excellencies, at the end, let me assure you that Pakistan will always stand for peace, justice and development, for a revitalized United Nations, and for cooperative and multilateralism that is fair and inclusive and delivers for all. Therefore, let this 80th anniversary not simply commemorate history, let us make history and chart a future for the next 80 years with these United Nations as enduring hope for global good. Let us truly strive to become better together. Thank you very much. United Nations, long live. God bless you. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें जलासे का खिताब आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया। धुआंधार के खिताब था जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ उमूर को बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि भारत ने पहलगाम वाक़े के तहक़ीक़ात के ताउन की पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। भारत ने इंसानी अलमियत से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि भारत ने शहरी इलाकों पर हमला करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत की जानिब से सरहदों की सालमियत और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी की गई है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपना हक़ दिफ़ा इस्तेमाल किया। मुशर्रफ अब्बास ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुज़ाहिरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत दिखाई। अपने अवाम के समाजी और मुआशी तरक्की हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसा क्लियर कहा गया। मज़ीद कहा गया कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बुनियादी इस्लाहात लाई गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से क्लाइमेट चेंज से मुतालिक बात की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती बहरान के ज़िम्मेदारान को भी अपने वादों की तकमील करना होगी और अपने अवाम की समाजी और मुआशी तरक्की हुकूमत की एक तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह भी कहा गया कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बुनियादी इस्लाहात लाई गई हैं। क्लाइमेट चेंज के पर जो है बड़ी तफसील से बात की गई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से टैक्स के निज़ाम में वसअत और सरमायाकारी का फ़रोग़, डिजिटाइजेशन पर भी तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सी पैक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एक अहम जुज़्व है। मसनूई ज़हानत, क्रिप्टो और दीगर ऐसे इक़दामात के मुस्तक़बिल की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इक़दामात को सराहता है। इसके अलावा ये भी कहा कि हुकूमत तवानाई, सनत, ज़राअत और कानकनी और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में फोकस कर रही है। सलामती कौंसल गैर मुस्तक़िल रुकन की हैसियत से पाकिस्तान तनाज़ात को रोकने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान एक मौसर नुमाइंदा और बाएतमाद अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत भी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इससे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर से मुतल्लिक़ जो है बड़ी डिटेल में ज़िक्र किया है। गज़ा जंगबंदी से मुतल्लिक़ भी बात की गई और यह भी कहा गया कि हमारी खारजा पॉलिसी बेहतर है। हमें मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। इसको इस तरीके से ही हल करना चाहिए। गुज़िश्ता साल इसी प्लेटफॉर्म में खबरदार किया था पाकिस्तान किसी भी जहारियत का फैसला कुन जवाब देगा। ये अल्फाज सच साबित हुए जब मई में पाकिस्तान को मशरक़ी मुहाज से जहारियत का सामना हुआ। गरूर में मुब्तला दुश्मन को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने क्लियर ये कहा है भारत ने पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। हम मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात का पुरअमन हल में इसमें यकीन रखते हैं। इसके साथ ही सीनियर तज़कियाकार फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वर्डिक्ट लेंगे। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बड़ा धुआंधार खिताब किया गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। तरतीब से उन्होंने तमाम इशूज़ को एलैबोरेट किया है। आप कैसे देख रहे हैं इस खिताब को? जी, एक मुकम्मल और बड़ा जामे किस्म का खिताब था। एक आप समझ सकते हैं कि ये वॉइस ऑफ नेशन थी। नो मैटर के किसने खिताब किया, सियासी इख्तलाफ हमारा क्या है, हमें ये देखना चाहिए कि ये एक आलमी फोरम था कि जहाँ पर रियासत की नुमाइंदगी वो शख्स कर रहा था कि जिसे अवाम ने वोट देके मुंतखब किया है। अब इसको आप किसी भी सियासी तनाजुर में देखें तो ये ज्यादती होगी। इस इब्तदाई का मतलब ये था कि मैं ये कह सकूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ या 25 करोड़ अवाम जो हैं वो उनके दिल की आवाज ये खिताब था, चाहे उनकी सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो। इसमें हर तरह की चीज का पाकिस्तान ने मौक़िफ़ का इजहार किया है उन तमाम चीजों के ऊपर के जो दुनिया के अंदर इस वक्त हो रही हैं। खासतौर पर आपने देखा कि किस तरीके से नेतन्याहू के खिताब का बाइकआउट किया गया और फिर किस तरीके से पाकिस्तान की पजीराई तालियां बजाकर की गई, वज़ीर पाकिस्तान का तालियां बजाकर इस्तकबाल किया गया। ये एक गैर मामूली खिताब था कि जिसमें भारत के साथ जंग, भारत की जो है वो आलमी मामलात, इंसानी मामलात के ऊपर सियासत, पहलगाम वाक़या हो या पुलवामा वाक़या हो, इस तरह के वाक़यात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पे हमले का जवाब
उन तमाम मामलात का न सिर्फ बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो अदा किया गया, बल्कि एक एक चीज को जो है वो दुनिया के सामने रखा गया। वहाँ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इससे मतलब मौक़िफ़ दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धुआंधार खिताब किया है और 80वें इजलास के खिताब वज़ीर आज़म ने किया। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का लंबरदार भी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस खिताब की तवज्जुह से मुख्तलिफ़ इशूज़ जो हैं वो उठाए हैं और एक ही पॉइंट उठाया है, हम मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। फवाद साहब ये भी बताएगा, अभी आप कंटिन्यू कीजिएगा वहीं से और मेरा पॉइंट भी ऐड कर लें। भारत के 7 तैयारे गिराने का जिक्र अक़वाम मुत्तहिदा में करना कितना अहम था? क्या इससे दुनिया को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और अज़म का सही अंदाजा हो सकेगा? लेकिन इसके जरिए वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने जो बात रखी थी इससे पहले वो एक क्रेडिबल बात थी। जब आप अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये बात करते हैं कि आपने दुश्मन के साथ तैयारी गिराए, आपने भारत के साथ तैयारी गिराए, तो इसका मतलब ये है कि आप तमाम तर सबूतों के साथ ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके पास एक दलील है और आप एक सब्सटेंस की बुनियाद पर जो है वो दुनिया के सामने ये बात रख रहे हैं। इससे पहले हम ये बात कह सकते थे कि पाकिस्तान ने कभी आलमी सतह के ऊपर जो है वो इस मौक़िफ़ का इज़हार नहीं किया कि उसने दुश्मन के साथ तैयारी गिराए थे। लेकिन अब आप देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में ये रकम रहेगा कि पाकिस्तान एक फाते की हैसियत से यहाँ आया था और उसने दुश्मन के साथ तैयारी गिरने का यहाँ तज़किरा किया था। इसका मतलब ये है कि रकम होने वाली तारीख में अब हिंदुस्तान के साथ तैयारों का किस्सा, जिसको हम कभी 6 समझते थे, कभी 7 समझते थे, ज़ाहिर है कि ये तिनके की तरह अभी गिरने वाले या कागज के खिलौनों की तरह जो है वो गिरने वाले तैयारे थे कि जिसका तस्करा, जिसकी काउंटिंग पाकिस्तान पेश करता रहा है। और हमने ये देखा कि वज़ीर शहबाज शरीफ ने इसका तस्करा किया। जब तकरीर के ऊपर अगर आप आ जाए तो तकरीर के अंदर आप ये देखें कि ये मुकम्मल तकरीर जब मैंने इसको करार दिया तो सबक सिर्फ दुनिया में ठीक है, फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक वर्क दे रहे थे और ये खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया है 80वें इजलास से खिताब, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ इशू से मुतालिक बड़ी तफसील से तमाम तर मामलात को बयान किया है और यही कहा कि हम मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए ही तनाज़ात का पुरअमन हल पर इस पर यकीन रखते हैं। गज़ा से मुतालिक जो है बड़ा डिटेल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम को इसकी भरपूर हमायत करता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि 1967 से पहले की सरहदों के तहत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। वज़ीर आज़म की जानिब से मज़ीद इससे मुतालिक ये भी कहा गया कि फ़लस्तीन मज़ीद इसराइली इसमें नहीं रह सकते इस जहारियत में और पाकिस्तान इन पहले मुल्कों में शामिल है जिसने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। पाकिस्तान कई मुल्कों की तरफ से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम भी करता है। हम दूसरे मुल्कों से भी तवक्को करते हैं कि वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करे। क्लियर वर्ड्स में ऐसा कहा गया। अरब इस्लामी मुल्कों के इजलास के इनेकाद पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं, इसका भी तज़किरा किया गया। सदर ट्रंप के इक़दाम से जंगबंदी की नई उम्मीदें पैदा होंगी, ऐसा कहा गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया दोहा पर इसराइल का हमला कतर के खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इस वाक़े की भी मज़म्मत की गई वज़ीर आज़म की जानिब से। पाकिस्तान कतर के अवाम के साथ खड़ा है, अनाउंसमेंट की गई। यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों की भी हमायत करते हैं, ऐसा कहा गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है, ये कहा है वज़ीर आज़म ने क्लियर वर्ड्स में। और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बात की है और यह भी कहा है कि आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है जो हमारी बका को ख़तरे में डाल रही है। हमारी खारजा पॉलिसी बाबाए कौम के विजन की रहनुमाई में पुरन बकाए बाहमी पर मबनी है, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खबारिश से मतलब भी बात की गई। पाकिस्तान पुरान और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगान बुरी हुकूमत को दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर इक़दाम अब करना होंगे। नफरत पर मबनी नज़रियात, हिंदुत्वा सोच दुनिया के लिए एक ख़तरा है। खिताब के दौरान ऐसा कहा गया। यह भी कहा गया दुनिया को इस्लामोफोबिया की वजह से पाए जाने वाले ख़तरा का इदराक है, हमें नफरत और तफरीक़ का ख़ात्मा करना होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि दुनिया को माहौलियाती बहरान का सामना है जिसके लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं, बहुत ज़रूरी हैं। साल 2022 में पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा और यही क्लाइमेट चेंज से मुतालिक बात की जा रही थी वज़ीर आज़म की जानिब से। कितना नुकसान का सामना करना पड़ा, तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तानी मैशत को $34 अरब का नुकसान पहुँचा। रवा साल भी पाकिस्तान को बड़े सैलाब का
सामना करना पड़ा, इसका भी जिक्र किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। इस खिताब के दौरान सैलाब के बाइस हज़ारों देहात मुतासर हुए। वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा, सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को नागहानी आफत से निपटने के लिए माहौलियाती एमरजेंसी का ऐलान किया गया। पाकिस्तान का फ़िज़ा में कार्बन के अखराज में हिस्सा सालाना 1% से भी कम है। क्लियर कहा गया पाकिस्तान ने इन 10 मुल्कों में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान माहौल दोस्त तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़ दे रहा है। मौसमियाती बहरान के ज़िम्मेदारों को भी अपने वादों की तकमील करना होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से इस खिताब के दौरान ये भी कहा गया कि मैशत का मसाइल कम करने के लिए बुनियादी इस्लाहात लाई गई हैं। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है जो हमारी बका को ख़तरे में डाल रहे हैं। सी पैक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का अहम जुज़्व है। सी पैक से मतलब भी बात की गई। यह भी कहा गया कि मसनूई ज़हानत, क्रिप्टो और दीगर ऐसे इक़दामात मुस्तक़बिल की ज़रूरत है और पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इक़दामात को सराहते हैं। हुकूमत तवानाई, सनत, ज़राअत, कानकनी और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दे रही है। सलामती काउंसिल के गैर मुस्तक़िल रुकन की हैसियत से पाकिस्तान तनाज़ात को रोकने में तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद करता रहा है। खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए एक नई तारीख़ रकम करना होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से इस खिताब के दौरान ऐसा कहा गया है और वज़ीर आज़म की इस स्पीच को वहाँ पर मौजूद इलाक़ीन की जानिब से भी सराहा गया। क्लैपिंग की गूंज सुनाई दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस तकरीर के दौरान एंटोनियो गुतेरेस की जुर्रतमंदाना क़यादत काबिल तारीफ़ है। तारीफ़ की गई वज़ीर आज़म की जानिब से। आज दुनिया की पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो पेचीदा है। तेज़ी से हालात बदले हैं। ख़ित्ते में दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। क्लियर कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से। ये भी कहा गया कि आलमी क़वानीन की खुले खिलाफ वर्जी की जा रही है और इंसानी बहरान बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हमें इक़दाम करने होंगे। माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है जो हमारी बका को ख़तरे में डाल रहे हैं। दहशतगर्दी की दुनिया के लिए एक संगीन ख़तरा बन चुकी है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और जाली खबरों ने एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया है। माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है जो हमारी बका को ख़तरे में डाल रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया है। हमारी खारिजा पॉलिसी बाबाए कौम के विजन की रहनुमाई में पुरअमन बकाए बाहम रखते हैं। और इसके साथ ही दिफाई तजज़ियाकार अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। सर, बड़ा धुआंधार खिताब देखा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। तमाम तर इश्यूज़ पर बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया गया, बड़ी डिटेल से बात की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है जब सदर ट्रंप साहब से मुलाकात हुई उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में रोशनी डाली गई होगी और पाकिस्तान की जानिब से जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान को दरपेश, उनके हवाले से बातचीत की गई। और इसके बाद जो है पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखना, यही मकसद होता है। दुनिया को जो दरपेश मसाइल होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनके दरमियान में एक राब्ता रखने का बहाना है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। और उसके अंदर जो है वो जाहिर है इस बार जो मामलात थे वो फ़र्क थे। दुनिया पाकिस्तान की तरफ बड़ी जो है वो और तलब निगाहों से देख रही थी कि ये पाकिस्तान कौन सा मुल्क आ गया जिसने अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को जो है वो ढेर करके रख दिया। और भारत का गरूर जो था वो दुनिया के सामने जो है वो बिल्कुल जेर जमीन बोझ कर दिया। अब पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से कोई वो उनकी सोच को जानना चाहते थे। यही वजह है कि वजीर आजम को बहुत ज्यादा जो है वो पजेराई मिली। बुनियादी तौर पे वजीर आजम साहब तो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। असल में ये इज्जत जो है ये पाकिस्तान के हर मर्द-ओ-ज़न को मिली है और मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान कौम को इस पे फख्र होना चाहिए। दूसरी जानिब जो है मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब ने जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उनको उजागर किया, जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, जो इस टाइम पे खित्ते के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। और फिर पाकिस्तान एक बड़े कद के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गया, एक तो मार्का हक में जीत के बाद, और दूसरा जो है वो जिस तरीके से खित्ते के अंदर पाकिस्तान ने अभी जो अरब पेनिनसुला है इसके अंदर जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी हुई है, ये एक बहुत बड़ा संग मील है। इसके आने वाले वक्तों में बहुत ही खूबसूरत असरात जो है वो आप देखेंगे, जो ना सिर्फ हमारी दिफाई और स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर बेहतरी आएगी, बल्कि मेरे ख्याल में हमारे मुआशी इस्तेहकाम के अंदर एक जो है वो संग मील साबित होगा। साथ ही साथ जो है पूरी दुनिया के अंदर, बिलखसूस अरब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाम जो है वो बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर जब वजीर आजम की तकरीर के चर्चे थे और लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कब पाकिस्तान का जो मौकफ है वो दुनिया के सामने रखा जाएगा। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा शिकार पाकिस्तान है और पाकिस्तान को जाहिर है जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके अंदर अमेरिका के हवाले से भी हमने अपनी बात जो है वो उन तक पहुंचा दी है।
اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بہت حد تک پاکستان کی بات سمجھ آئی ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ جس طریقے سے ہمارے اوپر آبی دہشت گردی جو ہے وہ بھارت نے لانچ کی ہے، اور اس کے علاوہ جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، میرے خیال ہے اس سے پہلے UNGA سے پہلے بھی جو پاکستان کو فائدہ ہوا، میرے خیال میں خارجہ پالیسی کے اندر ایک جناب اسحاق ڈار صاحب کا بڑا کردار ہے، وہ ان کا بھی، فیلڈ مارشل صاحب کا تو ہے ہی، جنہوں نے جو ہے وہ اپنی دفاعی جو اسٹریٹجی ہے اس کے ذریعے دفاعی ڈپلومیسی کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کو میرے خیال میں قائل کیا اپنا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسحاق ڈار صاحب بھی مختلف فورمز کے اوپر گفتگو کرتے رہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی جو اب خارجہ پالیسی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو چکی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مغرب اور مشرق دونوں کو ایک بڑا بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک تو ہمیں میرے خیال میں اس کے بہتر ثمرات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر، ابھی ماضی قریب کے اندر جس طریقے سے BLA اور مجید بریگیڈ کو جو ہے باقاعدہ دہشت گردوں کی لسٹ میں امریکہ نے ڈالا، یہ پاکستان کی بڑی خارجہ پالیسی کی ایک کامیابی ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر عملی طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ مزید اس میں کوآپریشن کیا ہوگی، پاکستان کے جو درپیش مسائل ہیں، جو علاقائی مسائل ہیں، جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انڈیا کے حوالے سے جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، اور پھر جو اس ٹائم پہ جو قدرتی طور پر جو ہمارے اوپر آفات آ رہی ہیں، جس میں سیلاب ہے، جس کے اندر جو ہے وہ لینڈ سلائیڈنگ ہے، ڈیفارسٹیشن ہے، اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں دنیا جو ہے پاکستان کو ان پہلے 5 ممالک میں کھڑا کیا ہے جہاں قدرتی جو یہ مسائل ہیں یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار جو ہے کچھ حد تک تو پاکستان بھی ہے، لیکن اس کے اندر بیرونی دنیا بھی جو ہے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو پاکستان میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی بہتر ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے میرے خیال میں دنیا کے لیے ایک آئی اوپنر تھا۔ اور جس طریقے سے میں یہاں ضرور یہ تعریف ضرور کروں گا وزیر اعظم صاحب کی، جب بھارتی ایک بدماش ٹیلی ویژن نے ان سے ایک بڑا چبھتا ہوا سوال کیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم پاکستان کے اوپر جو دہشت گردی ہے وہ بھارت کی جانب سے اس کو ہم ضرور ڈیل کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کا جواب جو تھا میرے خیال میں ایک بھارتی میڈیا کو جو ہے وہ خاموش کرا دیا، اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ گونگ ہو گئیں۔ تو میرے خیال ہے کہ اس ٹائم تک تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے سفارتکاری چل رہی ہے، اور جس طرح سے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں ان کا سامنا کیا جا رہا ہے، اور بیرون دنیا جو ہے ہمارا جو ایک عزت اور وقار میں جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ یقیناً ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ دنیا کتنی ہمارے ساتھ میننگ فل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹریٹجک اور جو ہمارے ساتھ ڈیفنس اور اسی طریقے سے ہماری جو معاشی مسائل ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ دیکھتی ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ کے اندر جب ٹریجری کو جو ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اگر اشارہ کریں تو ظاہر ہے پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں یہ مشکل نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ابھی آج سے کوئی 2 دہائیوں پہلے آئی ٹی کا ایک بہت بڑا بزنس پاکستان میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک امریکن پالیسی میں شفٹ آیا اور انہوں نے وہ آئی ٹی کا بزنس جو ہے وہ انڈیا لے گئے۔ اس بزنس کو پاکستان آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اگر صدر ٹرمپ صاحب جو ہے ہماری بات سے کنونس ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع جو ہے ایک بڑی تعداد میں کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بھی بتائے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اس خطاب سے متعلق وزیر اعظم نے ڈپلومیسی کے ذریعے مسائل کے حل پر زور دیا اور کلیئر کہا کہ ہم مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل پر اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے اس سے متعلق کہ یہ پیغام پاکستان کے امن کی خواہش کو کس حد تک دنیا تک پہنچاتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے امن کی خواہش جو ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب پاکستان کے اوپر بھارت نے ناجائز رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ حملہ کیا اور دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہے ہیں جس کو وہ خود تسلیم کرتے پھر رہے ہیں، اور پھر بھارت کو تو دیکھیں نا ہزیمت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے وہ دہشت گرد بھیج رہے ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ آپ کے برطانیہ میں ہوں یا امریکہ میں جو ہے وہ قتل کرنے کی سازشیں ہوں، بھارت بری طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تصادم نہیں چاہتے بلکہ مکالمہ چاہتے ہیں، لیکن مکالمہ جو ہے ایک ایسے وقت میں جو برابری کی سطح کے اوپر ہو، جو انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہو، جو سچائی کے اوپر مبنی ہو، نہ کہ وہ پروپیگنڈا کے اوپر ہو۔ بھارت نے ایک بہت ہی زہریلا پروپیگنڈا پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے خلاف بن رکھا تھا، جس میں خاص طور پہ جو ہے وہ تیزی تب آئی جب ہم
हमने देखा कि माजी की हुकूमत जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। उसके नतीजे के अंदर जिस तरीके से लोगों के जहनों में जहर उंडेला गया, नतीजा ये हुआ कि वो अपनी ही रियासत जो है उसके खिलाफ खड़े हो गए। 9 मई जो है वो एक बहुत बड़ा वाकया था जिसको कौम कभी भी फरामोश इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये एक और भी बात है कि दुनिया के अंदर एक और बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी यह है कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर थी, 5th जनरेशन का मतलब तो ये था कि लोगों के अंदर लोगों को बागी किया जाए, और 6th जनरेशन वो वॉरफेयर है जो अमली तौर पर उसके ऊपर अमल करती है। पाकिस्तान ने 6ठी जनरेशन वॉरफेयर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को जो है पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को शिकस्त दी है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल में, और दुनिया जो है वो देखती है। और यही वजह है कि भारत जैसा मुल्क जो है वो भी चाहता है कि एक ISI उनके पास हो, एक ISPR उनके पास हो। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि पूरी दुनिया की कुव्वतें मिल के भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो ये चाहता है कि देखें, हमने अमन का इससे बढ़कर सबूत क्या होता कि पाकिस्तान ने चाहता तो वो न्यूक्लियर जंग की तरफ मामलात ले जाता, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल किसी किस्म की जो है वो गैर जिम्मेदाराना जो है वो काविश नहीं की, बल्कि पाकिस्तान जो है वो अमन की बात करता रहा। और जब अमेरिका ने इंटरवीन किया तो पाकिस्तान ने जो है फौरन लब्बैक कहा। पाकिस्तान चाहता तो भारत की वो धुलाई करता कि भारत को अभी पता चलता कि आधा भारत जो है वो विधवा हो चुका होता, लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है। मसला यहाँ ये है कि पाकिस्तान ने जैसे ही अमन की बात हुई, पाकिस्तान ने लब्बैक कहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी एक अच्छे मरासिम चाहता है, लेकिन अगर दहशतगर्द इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भेजते रहेंगे अफगानिस्तान के जरिए, तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए कोई चॉइस नहीं रह जाएगी, बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को जो है अपनाया जाएगा, और फिर जो भी तरीका होगा उसके लिए हमने अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है, और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पाकिस्तानी फौज पुरअज़म है, पाकिस्तानी मीडिया एक जिम्मेदार मीडिया है जिसका पूरी दुनिया ने इसका इदराक किया, और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान की कौम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब दुश्मनों के चुंगल से निकल रही है। उसको समझ आ रही है कि पाकिस्तान को एक सोचे समझे मंसूबे के जरिए जो है अवाम और रियासत के दरमियान में जो है कदूरतें फैलाई गई, जो वक्त के साथ साथ जो है वो दूर हो रही हैं इंशाअल्लाह ताला। और वज़ीर आज़म साहब का जो अमन का पैगाम है मेरे ख्याल में दुनिया ने देख लिया है, और हम जो है वो अमन के दाई हैं। जहां भी UN पीस मिशन होते हैं पाकिस्तान उसमें फौजें भिजवाता है, और ये फौजें जो है हमेशा एक बरतर किरदार अदा करती हैं, बल्कि जो UN के चार्टर से हट के भी जाके काम करती हैं। खासतौर पर सोमालिया का अगर वाकया देख लें, जिसके अंदर जो है बाकायदा पाकिस्तान ने जो है अमेरिकन फोर्सेस को रेस्क्यू किया था, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके अंदर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहादुर फौज है अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह के मोटो पे कायम है। और मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाला वक्त जो है उसमें दुनिया के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान से होकर गुजरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम के मुत्तहिद होने और भारतीय जाहिरियत का भरपूर जवाब देने का जिक्र किया, क्या इससे दुनिया को ये पैगाम गया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा? ये भी बताइएगा सर कि भारत के 7 तैयारे गिराने का जिक्र अक़वाम मुत्तहिदा में करना ये कितना अहम था? देखें, अभी भारत के 7 तैयारी गिराने का जिक्र करने से पहले आपने देखा 2 दिन पहले जो है 2-3 दिन पहले जब जनरल किदवाई जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन को एक वक्त में कमांड करते रहे, बहुत ही अहमियत की कमांड है, और जिससे तमाम हमारे मिसाइल प्रोग्राम जिसको दूसरे लफ्जों में कहा जाए, तो ये उन्होंने बाकायदा जहाज़ों के टेल नंबर तक जो है वो बता दिए, जिसके ऊपर अभी तक भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और 7 के 7 जहाज़ों का उन्होंने बताया, जिसमें 4 रफेल जहाज थे। अब ये बात जो है ये ऐसी चीज है, इसको कहते हैं उर्फ आम में हमारे पास उनके सिग्नेचर्स हैं, और वो हम पूरी तफसील, हमारे पास पूरी वीडियोस मौजूद हैं, और इसको भारत नहीं झुटला सकता, इसका पूरी दुनिया नहीं झुटला सकती। देखें, भारत अपनी कौम को उल्लू बना सकता है, लेकिन वो दुनिया को जो है वो आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, क्योंकि दुनिया की सैटेलाइट सिस्टम मौजूद हैं। अमेरिका के पास भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, उनको मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा है भारत, और भारत जो है वो गलत बात कर रहा है। इस वजह से जो ऐसे टाइम पे तो आप देख लीजिए कि वहां भारत के इस टाइम पे जो वजीर आजम है वो कहाँ नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनके लद्दाख में आग लगी हुई है, वहां जेन जी जो है वो सरापा एहतजाज है, वहां लोगों को मारा जा चुका है, और यूनाइटेड नेशन में अमन की बातें हो रही हैं।
اور بھارت کس منہ سے جائے گا؟ اس کا تو منہ جو ہے وہ رسوا اتنا ہو چکا ہے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے بھارت کے حوالے سے جو پوری بات کی، 7 جہازوں کے گرانے کی بات کی، ہم اپنے ثبوت شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس جنگ کو مزید بڑھا سکتے تھے اگر ہم چاہتے